Good morning. So, I welcome you in the topic linear equation in two variables. This is the PDF in front of you, which you are going to use from today. So many questions are there in this, and I'm sending it to you. Don't worry. So, this is the PDF. Today, we will be completing maybe question number till question number 8. We are going to complete. So, let's start understanding one by one all the questions. Chalo, let's understand. First of all, before we begin the topic, I would like to tell you one simple concept of linear equation that is called as a standard form of linear equation. You have understood what is linear equation in your two videos previously, and now we are going to understand the base of this topic. We are going to complete all that now. The standard form of linear equation क्या होता है? सबसे पहले linear equation क्या होता है? The degree of each term in the variable in the given equation is 1. We call it as linear equation. For an example, x plus y is equals to 5, or 2x plus 3y is equals to 7, or x minus 7y is equals to 9. All these are considered to be linear equation in two variables, sorry, because the power of each term, each variable is 1. So we call it as linear equation. Of course, there are two variables, that's why we call it as linear equation in two variables. But these are not a standard form. So what is standard form of linear equation in two variable? So what is standard form? Standard form is ax plus by plus c is equals to 0. This is called as a standard form of a linear equation, right? So let us now understand the very first question from the PDF. The question is, write the following equation in the standard form. Let us understand how can I write that in the standard form. पहले standard form में यहाँ पे लिखता हूँ ax plus by plus c equal to 0. What do you mean by this standard form? Let me tell you. All the terms which has got x, y and constant, everything to be brought at one side, and the other side should be 0. That's it. That is nothing but called as a standard form. So in the first equation, if I want to convert into standard form, what I will do, 3x plus 2y minus 2 is equal to 0. हो गया मेरा standard form done. Okay, so this is A. B, similarly, can you just write it? B is 7x minus 5 minus 27 is equal to 0. But unfortunately, y is missing in this particular equation. So what I can do, that I'll tell you in short time. पहले मैं ये लिखता हूँ 7x minus 32 is equal to 0. Now that y term I can add in this form, plus 0y minus 32 is equal to 0. So this is the way how I can write even if some term is missing in the given equation. See, if I see, it is just x minus 2y plus 0 is equal to 0 because constant term is missing in it, right? D, if I check, this is the standard form, isn't it? D, if I check, it is x by 2 plus 1 is equal to y by 3. So imagine if I shift y by 3 this side, I get x by 2 minus y by 3 plus 1 is equal to 0. This can be the standard form. Let me tell you, this can be the standard form. But this is not the way how we write the simple equation. In a simple equation, we should not have fraction like this. Okay, so let us try to reduce this fraction. How can I reduce this fraction? Let us understand that. कुछ नहीं करना है, इस टर्म को क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, विच आई गिव द ब्रैकेट. सो 3x minus 2y upon 6 plus 1 by 1 is equals to 0. This can be the equation, right? Now what can I do? Again ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा. तो 3x minus 2y into 1 will be the same, plus 6 upon 6 into 1 is 6 is equals to 0. Shifting 6 the other side, what do I get? 3x minus 2y plus 6 is equals to 0. 6 into 0 will be 0, and this becomes the standard form for this equation, right? E, you can try all by yourself. That's it. I hope now you must have understood what exactly do I mean by standard form. So these are simple sign conventions that what we have to follow for linear equation in two variable. The first part is nothing but standard form. Understood? Okay, let's go ahead. Which among the following are the solutions of this equation?
It's a very simple question. You know that. What do you mean by solution of the equation? If I put this value as x and this value as y, the equation should get satisfied. For an example, just for an example, I'll take the equation here, x minus 2y is equals to 4, right? If I put x as 0, minus 2 into y as minus 2 from here, is that equal to 4? Check kar lo. Yes, it is equal to 4 is equals to 4. That means yes, 0 comma minus 2 is a solution. Clear? Let's try for the next one. तो ये तो सॉल्यूशन है, बराबर ना, ये सॉल्यूशन है फर्स्ट वन. बी चेक करते हैं, 2 कॉमा 0. तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. 2 माइनस 2 इंटू 0, इज दैट इक्वल टू 4? नो, इट्स नॉट इक्वल टू 4. चेक कर लो, इट इज इन फैक्ट 2 माइनस 0 मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू 4. सो देयरफॉर 2 comma 0 is not a solution, right? In the same way, you can try other questions. I know this root sign might trouble you unnecessary, but still I'm not going to help you. You have to try and give me the answer, okay, whether it is solution or no. So it's simple, isn't it? कुछ नहीं है, सिर्फ put कर दो value in this equation in form of in place of x and in place of y, and check करो whether it is equal or not equal. If it is equal, it is solution. If it is not equal, it's not a solution. Okay, it's a simple idea, very simple idea. Let's go for the next question, fourth one. I'll tell you which questions you have to solve, don't worry. I'm teaching you one by one all the questions, and then I'll tell you from the PDF how many questions you have to solve today. बस understand करो, थोड़ा सा understand करो. Find the value of k if x is equals to 1 and y is equals to 1 is a solution of this equation. Okay, तो कुछ नहीं करना, 2 into 1 plus 3 into 1 is equals to k. 2 plus 3, 5 is equals to k. हो गया, that's it. So I have to just replace the x by 1 and y by 1 and I got the answer. Isn't it? So very easy, so very easy. Check कर लो. Here again 1 comma 2 is a solution, मतलब x is equals to 1. वही बोला है, बस in different language में बोला है. Same thing is asked but in a different language and you are expected to find the value of a. चलो चेक करते हैं. तो a into 1 plus a into y क्या है 2, right, is equals to 3. So a plus 2a is equals to 3. 3a is equals to 3. A will be equal to 1. That's it. I got the answer. A की वैल्यू मिल गई. So very simple. Okay. So देख लो यहाँ पे a comma 3 is the solution of this equation. Find the value of a. You can do that. Okay. Same thing यहाँ पर भी वही है. ये थोड़ा मैं ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ बस. That's it. Second one, eighth one I meant to say. So 2a plus 1 is x. X is equals to 2a plus 1. And what is y is equals to a minus 1. बराबर है ना? I'll be just putting the value into the equation. So 2x minus 3y plus 5 is equals to 0. 2 into x. So 2 into 2a plus 1. Minus 3 into a plus 1 plus 5 is equals to 0. Right? I'm just putting nothing else. Nothing else. So whatever mathematics I was knowing, whatever algebra I know, that I am just using, nothing else. So 2 I'll multiply by. So I get 4a plus 2. Am I multiplying by 3 or minus 3? Yes. Be vigilant here. Minus 3. I am not going to multiply by 3. I am going to multiply by minus 3. So minus 3a minus 3. Right? बराबर है ना? Plus 5. Don't forget that. ठीक है? तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ का मल्टीप्लिकेशन है, एंड प्लस 5 इधर है. दैट्स इट. ए वाले टर्म्स तो मुझे ए दे रहे हैं आंसर. 2 minus 3 minus 1 एंड ये प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज ए इज इक्वल टू माइनस 4. दैट्स इट. आई गॉट द आंसर. इजंट इट? कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है. एवरीथिंग इज ईजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. दैट्स इट. आज के लिए बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. कीपिंग इन माइंड दैट यू हैव स्टार्टेड योर स्कूल, आई एम नॉट गिविंग यू लॉट ऑफ वर्क. लास्ट क्वेश्चन है ये. राइट 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पे क्या करना है आपको? बस 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं यार, कुछ नहीं करना है ज़्यादा. चलो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये किया है आपने, एक्स इज इक्वल टू 3y. तो आपने पता है यू रिमेंबर, आपने एक टेबल ड्रॉ किया था. आई होप यू रिमेंबर दैट. ऐसे वाला टेबल ड्रॉ किया था.
एंड यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे y लिखा था, यहाँ पे x कॉमा वाई लिखा था, राइट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपके लिए आए थे, आपने आइसोलेट किया था वेरिएबल को, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे आई एम ऑलरेडी आइसोलेटेड है, x इज इक्वल टू 3y, x इज आइसोलेटेड। तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, समझ लो, x विल बी 0 अगेन। y की वैल्यू 1 है तो x 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 है तो 6 हो जाएगा। तो ये 0,0, 3,1 एंड 6,2 इनको क्या बोलते हैं आप लोग, इन्हीं को तो सॉल्यूशंस बोलते हैं। ओके, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यही हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, यहाँ पे कि पूछा कितना है, सिर्फ 2 सॉल्यूशंस। मतलब टेबल ड्रॉ करके सिर्फ 2 सॉल्यूशंस फाइंड करना है सारे इक्वेशंस के लिए, सारों के लिए, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। फिर भी आज के लिए ज़्यादा काम नहीं देता हूँ मैं, आपको बस पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। आपको क्या करना है समझ में आ गया, पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब कौन से A, B एंड C, फिनिश्ड। D, E एंड F हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो आज क्या क्या कंप्लीट करना है, शेयर इज द PDF। तो मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ, यहाँ तक लेके आता हूँ, स्क्रीन राइट करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equation कंप्लीट करना है, yes. Second question is a word problem. So when we discuss word problem, we are going to discuss all this part there. Easy है लेकिन तब करेंगे, no problem. ये कंप्लीट करना है, 4th one, 5th one, 6th one and 7th one. At the same time और एक क्वेश्चन था ना रे, जस्ट अ मिनट है। तो 7 तक तो कंप्लीट करना ही है, और एक क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, 8th क्वेश्चन भी करना है, यस। तभी मैं सोच रहा हूँ और किया था हमने, कहाँ गया, चलो फिर से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 आपको आज कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। ओके, सो इतने क्वेश्चन आज आप कंप्लीट करेंगे एंड योर डे विल बी डन फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज ज़्यादा कुछ वर्क था ही नहीं, थोड़ा बहुत मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया एंड देन यस डन, योर पार्ट इज़ डन। तो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। Till then, bye bye. See you tomorrow.